जब मैं बीकॉम कर रहा था राइट, मेरे पास तो दो ऑप्शंस थी यार, या सीए करो या फिर कैट की तैयारी करो और उसके बाद एमबीए के लिए जाओ। चीज़ याद आई, मुझसे किसी ने पूछा कि व्हाट इज़ हेवन एंड व्हाट इज़ हेल। तो हेवन इज, उसने बोला कि हेवन इज टू हैव एन इंडियन वाइफ, ब्रिटिश होम, चाइनीज फूड राइट, एंड एन अमेरिकन सैलरी। ठीक है। एंड व्हाट इज़ हेल, हेल उसने बोला टू हैव एन अमेरिकन वाइफ, a Chinese home, a British food, and an Indian salary. Right? So I started looking upon some accounting and finance course, professional course that will help me to lead that dream life. So I came across a lot of courses like obviously CA is there, ACCA, CMA, CPA, and through some guidance, my counselors, my friends, relatives, I thought that ACCA is the right course that will help me not only make an impact in the Indian MNCs, but also it can carry me to the abroad as well. Hello friends, welcome to another podcast, another very special guest. To give you a background, the Wall Street School started ACCA almost 2.5 years back. Right? And ACCA, you understand, it's a professional program which takes its own sweet time to complete. So we have Sahil Sharma with us, amongst our first students, who registered with us for ACCA. He is now a qualified ACCA and doing exceptionally good in his professional career. The purpose of this podcast is to understand from his journey, the sort of issues that he might have faced, the sort of so much of connection that many of you, who are wanting to make a career in the field of accounting or finance, as to what the growth trajectory should be, because many of you will be able to connect with his story. And Sahil, we have had so many ACCAs now, students, but you will always be very, very special for us because yes, you are amongst the first ones, who have been with us journey from the beginning and who have qualified your ACCA and now working in a professional setup. So many congratulations for completing your ACCA right now. Thank you, sir. It's an honor that you have invited me and I'm chatting with you. First, I have studied from you, now I'm chatting with you, so it's an honor, sir. नहीं यार, it's very special because हम hopefully आगे भी बहुत सारे ACCAs बनेंगे, लेकिन जो होता है ना first feelers and the first sort of students, तो बड़े जोश के साथ हमने शुरू किया था. You were amongst those, right? And very glad that you have been able to complete your ACCA, the entire journey. तो थोड़ा सा right from the beginning थोड़ा सा बताइए अपने बारे में. Plus 2, which year did you complete your plus 2? Sure, sir. So I completed in 2020 my 12th standards. कहाँ से? Modern Public School, Shalimar Bagh. Okay. And I got a good percentage, like 95.75%. So I obviously dreamt of going to Delhi University and I started my BCom honors. I soon realized that, sir, just BCom honors is not that sufficient enough to get me to a world of accounting and finance and achieve my goals. So I started looking upon some accounting and finance course, professional course that will help me to lead that dream life. So I came across a lot of courses like obviously CA is there, ACCA, CMA, CPA, and through some guidance, my counselors, my friends, relatives, I thought that ACCA is the right course that will help me not only make an impact in the Indian MNCs, but also it can carry me to the abroad as well. So that's why I started with ACCA. तो देख साहिल, मैं अपने ग्रेजुएशन का टाइम बताता हूँ. जब मैं बीकॉम कर रहा था राइट, मेरे पास तो दो ऑप्शंस थी यार, या सीए करो या फिर कैट की तैयारी करो और उसके बाद एमबीए के लिए जाओ. राइट. नाउ आई ऑनेस्टली एनवी दिस जनरेशन ऑफ योर्स बिकॉज आपके पास तो इतने सारे ऑप्शंस हैं. आप ACCA करो, आप CMA करो, आप CA करो, आप CS करो, आप CPA करो, कितने सारे ऑप्शंस हैं. तो व्हाई डिड यू एक्चुअली चूज ACCA? व्हाई नॉट चलो मैं CA ही करता हूँ? CA का क्यों सोचा कि चलो CA नहीं करनी मुझे? सर थोड़ा सा I come from that background that मैं थोड़ा I just don't want to follow the herd mentality. And obviously I have a due respect for CA as well. You are CA, my lot of mentors have been CA. But I thought कि कुछ unconventional क्यों नहीं try करते. And ACCA, then I came across ACCA, CFA. CFA में थोड़ी parameters थी कि you can only start once you are in the third year of your graduation. So I thought कि मुझे कुछ अभी start करना है, मैं अपने 2 साल भी waste नहीं कर सकता. And I thought and I came to know that ACCA is valid across 180 plus countries. So it can give me that global recognition. I can work in India as well. And if someday God permits that God gave me the permission to go and work abroad,
to work around different MNCs, work with different countries and earn that at euros and dollars. So why not get that opportunity? So I thought that multi-currency is a good thing in this generation that I can go for. हाँ, मतलब जो तुमने बोला ना, मुझे एक चीज़ याद आई. मुझसे किसी ने पूछा कि what is heaven and what is hell. तो heaven is, उसने बोला कि heaven is to have an Indian wife, British home, Chinese food, right, and an American salary. ठीक है. And what is hell? Hell उसने बोला to have an American wife, a Chinese home, a British food, and an Indian salary. Right? तो मैं समझ गया आपकी बात, क्योंकि देखो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, ठीक है. आई एम अ CA and I am recognized as a CA in India, like which is okay. Right. लेकिन एज एन ACCA यू आर रिकॉग्नाइज्ड अक्रॉस द वर्ल्ड, राइट. तो कहीं ना कहीं पर कुछ ऐसा लगा कि शायद मे बी मैं CA ही कर लेता. इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हुआ कि यार कि मैं CA नहीं कर रहा हूँ, मैं ACCA कर रहा हूँ, मेरे पीयर्स हैं वो CA कर रहे हैं. या फिर लगा कि यार मैं शायद एक बहुत अच्छा सा पावरफुल सा डिग्री कर रहा हूँ अपने एंड पे. सर टू बी ऑनेस्ट स्टार्टिंग में जब मेरे पीयर्स CA स्टार्ट कर रहे थे, CA कर रहे थे, बट उनको थोड़े मल्टीपल अटेम्प्ट्स भी लग रहे थे एंड इट्स अ लॉन्ग जर्नी ऑफ कोर्स. बट आई थॉट कि अगर मैं ACCA आई कुड हैव कम्प्लीटेड इट इन लेस देन लाइक 2-3 ईयर्स, तो मैं साथ में कुछ और वैल्यू एडिशन भी कर सकता हूँ ताकि इट कैन हेल्प मी इन माई ग्रोथ ट्रैजेक्ट्री एंड मैं और अपस्किलिंग कर सकता हूँ. लाइक रादर दैन 5-6 ईयर्स डाउन द लेन मैं सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, but like my ACCA BO and I'm doing another skill building courses like financial modeling or an MBA. So that's what my reason was कि start the course and get it right at the young age, then you can have the age on the your side. So I can do multiple things. तो ग्रेजुएशन के साथ साथ आपका क्या टारगेट था? जैसे ACC में 3 लेवल्स होते हैं, Exactly. नॉलेज लेवल होता है, स्किल लेवल होता है, प्रोफेशनल लेवल होता है. एंड यू बीइंग फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी यू हैड सर्टेन एग्जाम्पशंस आल्सो, ठीक है. तो क्या टारगेट था कि मुझे ग्रेजुएशन तक इतना तो करना ही करना है? Sir, to be honest, when I started ACCA, there was no exemptions. And I was also like, I could say that मैं इतना अवेयर भी नहीं था जब स्टार्ट कर रहा था एग्जैक्टली. तो मैंने सेकेंड ईयर से स्टार्ट करा एंड तब कोई भी एग्जेम्पशन नहीं थे टू बी ऑनेस्ट. बट इन ए वे इट्स ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साहिब. एग्जैक्टली. क्योंकि कहीं ना कहीं पर एग्जाम्पशंस ना होने से आपको वो वाले सब्जेक्ट्स भी पढ़ने पड़े जो शायद अभी एग्जाम्ड होते हैं, तो कहीं आपका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ड हुआ. एग्जैक्टली सर, आप भी मेंटर्स मेरे सारे यही सजेस्ट करते थे बाकी स्टूडेंट्स को भी कि यू शुड नॉट टेक एग्जाम्शंस बिकॉज इन अ वे दैट एग्जाम्स आर रिफ्लेक्टिंग इन योर स्किल लेवल, सेम एग्जाम्स आर इन योर प्रोफेशनल लेवल. तो एक अगर कोर्स आपका बिल्ड ऑन हो रहा है, आपका स्किल्स डेवलप हो रही है, दैट विल हेल्प यू. एंड ऑब्वियसली सर वी ऑल नो दैट college में we go for societies, we go for confidence development, not actual for rigorous studies. And which college you were in? केशव महाविद्यालय, Denver. That's a very decent college. Yes. ठीक है. तो that's why I thought कि exemptions अगर नहीं मिले that is a blessing in disguise as you just mentioned and I should start. तो second year में मैंने start करा and I thought that 9 exams तो मुझे anyhow complete करने हैं with my college. With your college. With my college. क्योंकि यार हमारे पास भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आते हैं जिनको ये एग्जाम्पशंस होते हैं, लेकिन हम इंश्योर करते हैं कि यार अगर वो एग्जाम्पशंस ले भी रहे हैं टू नॉट हैव दैट स्ट्रेस ऑफ द एग्जाम, दे आर एक्चुअली taught the fundamentals of the subject जिसके वो एग्जाम्पशंस ले रहे हैं ताकि उनका बेस स्ट्रॉन्ग बने. राइट. ठीक है. तो फिर उसके बाद 9 एग्जाम्स आपके ग्रेजुएशन तक हो गए थे? 9 एग्जाम्स हो गए थे. तो मतलब यू वर नॉलेज लेवल एंड स्किल लेवल कंप्लीट टिल योर ग्रेजुएशन. एग्जैक्टली. ठीक है. फिर so then placement sales happen and obviously ACCA helped me to work at the current company that I'm working with. And फिर मैंने and where are you working right now? I'm working with RSM USI as an audit experience associate. Excellent. So you got the campus placement? Yeah, I got the campus placement and obviously I got that edge that because I'm doing ACCA and I've already completed 9 exams, so obviously they were preferring me that I should join their firm. And honestly, when I entered the corporate world as well, ACCA gave me that real confidence, real practical edge over the other peers as well. How do you say that? मतलब क्या चीज़ थी जो आपके पास एक नॉलेज और स्किल लेवल ऑफ ACCA प्लस ग्रेजुएशन से आई जो शायद ही ग्रेजुएशन से नहीं आती? Sir, obviously that we have in our audit, in our ACCA audit subject is there. तो इन द ट्रेनिंग जैसे ही साइकारा हमारी ट्रेनिंग होती थी, जैसे ही सारे फ्रेशर्स आ रहे हैं एंड आई कुड एबल टू कम्युनिकेट विद माई मेंटर्स, विद माई लेक्चरर्स एंड दे वर लाइक रियली इम्प्रेस दैट
सीनियर एसोसिएट्स एंड सुपरवाइजर लेवल के जब लोग ये ACCA करते हैं, दे कुड हैव दैट कॉन्फिडेंस एंड दे वर आस्किंग सच क्वेश्चंस दैट यू आर आस्किंग इट. सो दे वर क्वाइट स्केप्टिक कि ये जनरेशन ऐसी है या फिर लाइक यू हैव ऑलरेडी cleared some exams, so that is the reason of that recipe that you are so confident in answering about that. And obviously that was reflecting in my work, which ultimately reflected in the feedbacks, and obviously that will reflect in promotion. So that is the entire case. बहुत बढ़िया. तो ACCA के प्रोफेशनल लेवल you took one attempt at a time? Yeah, sir, I took one attempt at a time, obviously because I was very new to the corporate world as well, and I took a break for 1 or 2 attempts as well, because we have January to April as the busy season. So managing work with studies, it's a bit difficult. तो कैसे था, मतलब देखो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं या उनको होता है कि जैसे CA में होता है, चलो डमी आर्टिकलशिप ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी है और CA की स्टडीज़ बहुत ज़्यादा हैं, और अब ऐसे ही होता है. और ACCA में भी वही वाला सेम प्रॉब्लम कि यार मैं तो स्टडीज़ बहुत टफ है, मैं तो डमी लेने वाला हूँ, एंड यू वर वर्किंग साइमल्टेनियसली. Exactly. So I just want to understand what was your routine, in which you were able to manage your studies as well as your professional thing, because RSM के अंदर as an audit person your busy seasons तो 10-10 12-12 घंटे लगते हैं. Exactly, sir. राइट. तो what was your typical routine? क्योंकि मेरा पर्सनल बहुत फर्म ओपिनियन है इसके ऊपर कि घर पे बैठकर once you're a graduate, घर पे बैठकर पढ़ाई करने का कोई सेंस नहीं है. प्रोफेशनल कोर्सेज आर सपोज टू बी डन बाय वर्किंग प्रोफेशनली. Exactly, sir. तो what was your typical routine at that time? Sure, sir. Sir, I would say कि थोड़ा सा sacrifices we have to make if we want to pursue something, if we want to become something. अब same time पे मेरे को एक kick भी मिलता था कि if my managers are appreciating me, why not to go to that next level, and why not to be just called an ACCA finalist or rather call as ACCA affiliate कि fully qualified में एक अलग वो है and just to at an associate level. So that helped me going on. And talking about my schedules, as you just mentioned, busy season में we were working like 12 hours, 14 hours a day. And it was quite difficult to manage studies with the work. But sir, obviously I had this thing in my mind कि थोड़ा सा सो के अगर मैं इस क्वार्टर में ACCA बन जाऊंगा या ये मेरा एक एग्जाम क्लियर हो जाएगा, like taking those mini baby steps will really help me to become what I am. तो कैसे किया, मतलब how did you structure it down? Sure, sir. So I tried both ways. Like I first researched some YouTube videos as well, but honestly सबका एक अपना तरीका होता है, and I preferred कि मेरे लिए क्या सूट करा कि I started waking up early 5 AM 6 AM 2-3 hours मिनिमम में इफेक्टिव स्टडी का स्ट्रेच करता था रोज. ओके. तो 3 hours मेरे वहाँ निकलते थे. Then 10 AM was the login time. तो मैं 10 AM से Was it work from home या? Sir, I work on a hybrid model. So 2 days I have to work from office, 3 days work from home. Got it. So जो मेरे 3 hours थे वो हो गए. 10 AM से मैं अपना वर्क स्टार्ट करता था. Then when I used to take some break like in the lunch break 2 PM, कुछ अगर मेरे रिवीजन नोट्स उसमें से मैं आई कुड गेट दैट हैंडी नोट्स एंड 15-20 मिनट्स ही अगर मैं निकाल पाऊँ, दैट वाज अ ब्लेसिंग. देन एट द नाइट आई यूज टू लाइक कवर अप ऑल माई क्लाइंट कॉल्स एंड ऑल दी ऑन शोर मीटिंग्स टिल 10 PM. Till 10 PM? Exactly, that was the bare minimum, sir. Alright. Because working till 10 AM to 10 PM, so it's like 12 hours a day. And then somehow I just like got that courage कि 1 घंटा भी अगर निकल जाए पढ़ाई के लिए, 1 घंटा अगर पढ़ाई के लिए निकल जाए तो बढ़िया हो जाएगा. तो that और कभी वो फीलिंग नहीं है कि यार चल यार छोड़ यार, मतलब कितना पैसे दे रहे हैं, ठीक है चल एक बार छोड़ देते हैं, एक बार मेरी डिग्री आ जाएगी उसके बाद फिर से पढ़ लेंगे और फिर से कर लेंगे. एग्जैक्टली सर, टू बी ऑनेस्ट ये थॉट आया था, बट एट द सेम टाइम मेरे ये भी थॉट आया कि अभी अगर इतना मेरे को पे मिल रहा है और ACCA के बाद कितना मिलेगा, तो दैट वाज द किक कि जो मैं गैप कवर कर सकता हूँ अगर मैं रोज इतना पढ़ूँ. पर दैट्स अबाउट अ क्वार्टर, एक एग्जाम होता है, इट रियली गिव्स अस कॉन्फिडेंस. तो वो मेरा मोटिवेशन था कि सर, और वो कहीं ना कहीं पर वो एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि बिकॉज एक एग्जाम होता है, राइट, यू कैन कंसंट्रेटेडली फोकस ऑन दैट एग्जाम एंड एट द सेम टाइम नॉट हैव दैट, जैसे CA के अंदर होता है ना यार 4 पेपर्स एक साथ देने हैं, Exactly. एक ग्रुप एक साथ निकालना है, राइट, तो दूसरा ग्रुप भी एक साथ देना है, तो वो कहीं ना कहीं पर बहुत ज़्यादा प्रेशर में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आ जाते हैं. I would agree, sir. That's a big advantage कि one paper at a time, then you can manage the efficiency and manage the plans. और plan out करके sir, if I am able to do like 1 step at a day,
then I am feeling confident. Obviously weekend is ours, so some people feel that अब 12-14 घंटे काम कर लिया, I have to relax, but I was at the mind कि मैं किसी और के लिए 12 घंटे काम कर रहा हूँ दिन में, weekend के लिए अपने लिए कर लेता हूँ थोड़ी पढ़ाई. वेरी नाइस. So that was this whole motivation behind बहुत this अच्छा. study. राइट. तो तुमने प्रोफेशनल के सारे ग्रुप्स एक साथ निकाले? यस सर, लाइक बी सीज़न में कभी होता था कि एक अटेम्प्ट मैंने स्किप करा, और एक जैसे एडवांस टैक्सेशन वाज द एग्ज़ाम जिसमें आई टुक मल्टीपल अटेम्प्ट एज वेल, क्योंकि आई वाज लाइक 47, आई स्कोर्ड 47 and 50 वाज द पासिंग मार्क. ऑब्वियसली द सब्जेक्ट वाज आल्सो बिट लेंदी, एंड बिजी सीजन में भी मैं अटेम्प्ट कर रहा था, एंड that's why I just took second attempt for that exam. But was your team supportive? RSM was supportive of the fact कि तुम साथ में पढ़ाई भी कर रहे हो, तुम्हारे एग्जाम्स भी हैं. Were they receptive to it कि और they were कि यार मुझे तो काम चाहिए, तुम अपनी पढ़ाई जैसे मर्जी मैनेज करो? No sir, to be honest, RSM is really supportive about this fact that you are either pursuing ACCA, CPA or CA. So they also encourage you to perform these professional courses, because at the end the firm is also benefiting. They have that record that ACCA professional is working at an associate level also. So they will also have that कि हमारे यहाँ associate भी ACCA है. So that is a thing, but also they have strict rules as well. If you want to become assistant manager or manager, you should have a professional qualification. Got it. So the better you do it, the better are your chances of promotion as well. And in my case, RSM has also sponsored the ACCA fees as well, which is a blessing as Very well. nice. So Ask them to also sponsor the fees of the Wall Street School. Okay, बहुत अच्छे. That's very good. Yeah. And this is the beauty of working in the top companies, because they have that element of employee care a lot. exactly sir. Right, in that sense. बढ़िया. ठीक है. And what's your age right now? Sir, I am 23. 23 की एज में you are a professional working with RSM for almost 2 years. 2 years, yes sir. ACCA qualified. Yes sir. Right. अगर साहिल, अगर तुझे if you go back to the time when you were graduating या फर्स्ट या सेकेंड ईयर में था, is there anything you would want to change कि यार शायद ये मैं और कर लेता या मुझे ये करना चाहिए था, और you are happy with the decisions that you took, the efforts that you have put in, the sacrifices that you have done? सर आई वुड थिंक दैट जब मैंने एकदम से कॉलेज स्टार्ट करा था तो कोविड, इफ़ यू रिमेंबर, कोविड भी उसी पीरियड में था, तो कॉलेज तो कुछ टाइम पे इट वाज ऑफलाइन, इट वाज ऑनलाइन. सो थोड़ा सा उस टाइम पे वी आर नॉट हैविंग एनी गोल और विजन, बट आई थॉट कि अगर उस टाइम पे मैं और जल्दी थोड़ा सा स्टार्ट करता तो इट वुड बी हैव बिन बेटर. बट एट द एंड आई फील जस्ट एवरीथिंग हैपन्स एट राइट टाइम एंड वी हैव टू जस्ट एम्ब्रेस इट. लाइक इफ़ आई सी कि अगर मैं किसी एग्ज़ाम में फेल हो गया या मेरे को री अटेम्प्ट करना पड़ा, उस टाइम पे आई वुड ऑब्वियसली फील डिसअपॉइंटेड टू बी ऑनेस्ट. बट आज आई फील दैट I have studied more of that concepts and I am greater familiar with that concept, so everything is for a greater good. So that's what I believe in it. बहुत अच्छे. And you are a part of that integrated program of financial modeling and valuations along with the ACCA program of the Wall Street School. Right. तो तुमने वो फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन वाला प्रोग्राम कब किया, जब तुम ACCA बनने वाले थे और लग रहा था कि पेपर के बाद कि अब तो मैं बन ही जाऊंगा? Exactly sir. So I remember that you gave me the choice कि you could start when you are done with your 2 professional exams or like 4 professional exams. So I thought कि last exam का जब हो जाएगा तब मैं enroll कर लूँगा और I will start. And I remember कि 1 month अभी पड़ा था रिजल्ट आने पे, तो whenever you asked me for the introduction I would say I am in ACCA, but फिर मैं बोलता था कि my result is awaiting. Right. And so that was a scene, but yeah I was confident and I remember तुमने सुबह 6:30 बजे मैसेज किया था कि I'm qualified ACCA now. It was very gratifying कि यार अपना बच्चा जो amongst the first students था, right, finally it's sort of life coming full circle, because we started ACCA almost 2.5 years back. Yeah. Right, and you were amongst the first ones to actually qualify the complete ACCA degree. Exactly sir. Right, and how was the feeling of your parents? कि कैसा लगा उनको? Sir, like- and your grandparent, because I had the privilege of meeting both of them because they were very worried about you कि कुछ करना चाहिए लड़के को. Sir, like everyone, ACCA was not that popular. Obviously, we as a generation got to know about the courses, but obviously assume that like my grandparent would not be aware of that. So every time I passed my level, skill level, knowledge level, he was like, "Are you doing right thing? Are you doing right thing?" But the day I finished my ACCA, I got promoted to experienced audit associate. He Very was nice. finally happy that yeah, you are doing the right thing. बहुत अच्छे. So everyone was emotional, and obviously we celebrated, we cut the cake, and that's
Super. It's a very gratifying feeling, yeah. For parents and grandparents, when their children do, they started off in a very very good manner, right? And I can see, from the way you conducted yourself in the sessions also, the way you completed all the assignments, right? That intent was always there. That honesty of working hard was always there. Right. Again, if you're in ACCA, it's not a fluke. It's a lot of effort, a lot of sacrifices have gone behind that. So any advice you would want to give to the freshers who are +2 or first year of graduation, still clueless about क्या करना चाहिए उनको लाइफ में? Sure, sir. So I would say that there are plenty and plethoras of courses these days. One should explore what interest they have it. Like they could go for CFA, go for ACCA, CMA, CPA. But once you have finalized it, it's always better to finish it off that course first and then go for another one. Because consistency is the key, and once you will finish that course, it will give you the better confidence. And obviously, if you have decided the mentors, just blindly trust on that and follow the process. You'll obviously be at the next stage. And just remember that never compare yourself with anyone else. Just compare your own progress, because somewhere could be ACC at 30, someone could be at 20. It's obviously because of some exemptions or some problems or opportunity as well. Just go in the flow and never compare yourself. Your intent should be pure, and God has a beautiful plan for everyone. That's what I say. A very mature statement coming from a young lad like you. Much more mature than your age, right? And Sahil, you have makings of a great career ahead, and I see you as growing very fast, very steady with ACCA in your armory. What next plans? आगे का क्या सोचा है? क्या करना है? Sir, आगे as I am already doing financial modeling and valuation course with the Wall Street, so I am now planning to pivot from audit to core finance roles like investment banking, and then work and get on some hands-on experience. Then see if I would need an MBA or a CFA, and see where life takes me. बहुत अच्छा है, और ऐसे ही होना चाहिए. मतलब इनिशियली दिस इज द नेक्स्ट लीप नाउ. एज अ ग्रेजुएट आपने शुरू किया, यू हैव अंडरस्टूड, यू हैव डन ऑल द डर्टी वर्क नाउ. You have the qualification to back you. Yeah. That validation is there. Right. अब इसके बाद next leap has to be a transition from an audit into a finance oriented roles, right? I'm pretty confident with your focus, with your determination, with your hard work, you're going to go places, right? So it was great to connect with you, Sahil. Wish you all the best, and I hope to see you again जब तू बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा in very few years. Sure, sir. Pleasure is all mine. Thank you, sir. Thank you.